Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Saeed, and in today's video, we'll discuss about Chat GPT. आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है कि चैट जीपीटी है क्या। हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे कि चैट जीपीटी है क्या और इसके क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, स्पेशली कंटेंट राइटिंग में, एंड हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स और इवन के डिजिटल मार्केटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हाउ इफेक्टिव दिस कैन बी। और चैट जीपीटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है कंटेंट क्रिएशन के लिए, ब्लॉग क्रिएशन के लिए, बट you can do a lot of things from with the help of this chat gpt. So if you don't have an account, you can just click in here for sign up, and it's gonna show you this form. यहाँ पे आप अपना ईमेल वगैरह डाल के कंटिन्यू करेंगे और ये आपका अकाउंट क्रिएट कर लेगा। मेरा क्योंकि अकाउंट मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, सो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको लॉगिन कर दूंगा। तो लॉगिन करने के लिए फिर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे एंड देन यू विल टाइप इन योर पासवर्ड। ओके, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। अच्छा, ओके, लेट्स गो फॉर नेवर नेवर नाउ। नाउ इसका प्लस वर्जन, पहले बेस वर्जन था, नाउ इसका प्लस वर्जन भी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। प्लस वर्जन बेसिकली क्या करता है आपको कि जो भी करंट मेरा प्लान है वो फ्री है। फ्री प्लान में जब डिमांड लो होती है तो अवेलेबल होता है, और स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स स्पीड है और रेगुलर मॉडल अपडेट्स होती हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसके $20 स्पेंड करके चैट जीपीटी प्लस लेते हैं तो आपको इसका प्लस प्रोग्राम मिल जाएगा, जिससे आपको चैट जीपीटी इवन के डिमांड हायर भी होगी, जब बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर सर्चेज़ कर रहे होंगे, तब भी आपको ये अवेलेबल होगी। क्योंकि होता ही है कि जब ज़्यादा ज़्यादा ट्रैफ़िक इसके ऊपर होता है तो इसको अनअवेलेबल कर देते हैं, और इसका प्लस के ऊपर रिस्पॉन्स टाइम भी फास्टर होता है, और प्रायोरिटी एक्सेस इसके न्यू फीचर्स की आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ प्लस। सो अब इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या-क्या हैं? रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड इन अर्लियर कन्वर्सेशन। अभी यहाँ पे मेरे पास कन्वर्सेशंस नहीं आ रही क्योंकि मैंने डिलीट कर दी थी। मैं नॉर्मली सेव नहीं रखता। लेकिन नॉर्मली ये क्या करता है कि आपकी कन्वर्सेशंस को यहाँ पर सेव भी रखता है। तो आप इसको किसी भी टाइम पे आप वापस हासिल करना चाहें तो आपको वो वापस भी मिल सकते हैं। उसके अलावा अलाउज़ यूज़र टू प्रोवाइड फ़ॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन एप्रोप्रिएट, आप इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट इसके ऊपर अगर आप कुछ करते हैं, जिस तरह कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिसको आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये वो उसके ऊपर उसको डिक्लाइन कर देता है, उसके ऊपर आपको डाटा नहीं प्रोवाइड करता। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये अक्सर आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है and may occasionally produce harmful instructions based और biased content प्रोवाइड कर सकता है। और इसकी जो ट्रेनिंग हुई हुई है वो 2021 तक जो नॉलेज है, इसके इसकी नॉलेज 2021 तक लिमिटेड है। सो इट नीड्स मोर ट्रेनिंग। So before getting into the use cases of ChatGPT, we'll ask from ChatGPT कि what actually ChatGPT is. So हम इसको पूछते हैं what is ChatGPT? Okay, now it's gonna give us the response कि ChatGPT क्या है? I am ChatGPT, a large language model created by OpenAI. अच्छा, जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है OpenAI. Okay, just use this as well. OpenAI ने क्रिएट किया इसको. Oh, that's looking quite goofy here. इसको रिमूव कर देता हूँ, इसके बगैर ही एक्सप्लेन कर लेते हैं चीज़ों को. I was trying to be a bit fancy here. Okay, so uh, I'm designed to understand and respond to natural language. कोई भी आप नेचुरल लैंग्वेज में, जिस तरह मैंने भी टेक्स्ट इसको दिया था, ये उसको रिस्पॉन्ड करता है। आई कैन एंगेज इन कन्वर्सेशंस, ये आप इस पे जेनेरिक क्वेश्चंस पूछ लें, उसके आंसर करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और क्रिएटिव कंटेंट जिस तरह स्टोरीज और पोइम्स तक क्रिएट करके आपको दे सकता है। सो मैनी रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड, और ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स की बेस के ऊपर जनरेट होते हैं, और ये क्या करता है, ये ह्यूमन स्पीच को बेसिकली मिमिक करता है। एंड दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द यूज केसेस ऑफ चैट जीपीटी। सो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, लेट्स से हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिकम न्यू इन ईयर। मेरे स्पेलिंग गलत है।
in 2023. So it's gonna give you complete roadmap and see, but it's gonna give you the steps कि आप financial goals set करें, आप अपने mean से below रहें, invest wisely, blah blah blah. It's gonna give you the a lot of information. And now, अच्छा इसकी बेस्ट थिंग ये है कि आप इसको किसी भी टाइम पे इसके रिस्पॉन्स को स्टॉप भी कर सकते हैं और या फिर दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स से अगर आपने कोई कोर्स करना है डाटा एनालिस्ट का, डिजिटल मार्केटिंग का, और आपको नहीं समझ आ रही कि मैं कोर्स कहाँ से करूँ, और कोर्स के आपको लिंक चाहिए तो आप क्या, और अगर आपको फ्री कोर्सेज के लिंक चाहिए तो आप इसको कह सकते हो प्रोवाइड मी विथ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, प्रोवाइड मी नहीं, लेट्स से गिव मी, इट्स गोना गिव यू दी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अगर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये आपको दे रहा है, आप इन लिंक्स पे जाके कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई विल क्रिएट अ ब्लॉग विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो अब मैं इसको कहता हूँ राइट ए SEO oriented blog for the topic of, yeah, blog on topic importance of self development। नाउ ये आपको एक ब्लॉग लिख के दे रहा है जिसमें प्रॉपरली आप देख सकते हैं, प्रॉपर ब्लॉग का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। टाइटल दे रहा है आपको और उसका इंट्रो दे रहा है, फिर हेडिंग वाइज आपको प्रॉपर ब्लॉग लिख के दे रहा है। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिस्कशन कि ये ब्लॉग परफेक्ट होगा नहीं होगा, इसका कंटेंट जेन्युइन होगा, अथेंटिक होगा नहीं होगा, इसमें प्लेजरिज्म होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें आप जो है बाद में खुद से एनालाइज करके या इसको रीड आउट करके इसमें एडजस्टमेंट या ट्वीक्स कर सकते हैं। बट द थिंग, द वे दिस इज स्पीडी, दिस इज पावरफुल, यू कैन सी दिस ये कंक्लूजन, और ये पूरा ब्लॉग लिख के दे देता। इसी ब्लॉग में से अगर मैं अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है तो उनके लिए कंटेंट निकालना है, तो अ, वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैं इसको कहता हूँ जनरेट कंटेंट फॉर 5 Instagram post from blog। सो उस उस इंस्टाग्राम पोस्ट की ये आपको एड कॉपीज लिख के दे देगा। सो पोस्ट वन बेसिकली क्या है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस। बेसिकली आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप उस आइडिया को माइंड में रखते हुए अपनी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, और उस पोस्ट डिजाइन करके उसकी कैप्शंस आपको ये दे रहा है, साथ साथ आपको हैशटैग्स भी क्रिएट करके दे रहा है। तो दिस इज अनदर कूल फीचर ऑफ चैट जीपीटी। अगर आप एक स्टूडेंट और आपको हेल्प चाहिए विद एसे राइटिंग या विद रिसर्च, तो या लेट्स आपको टीचर कहते हैं कि ये आपने यूज केस स्टडी करना है या कोई बुक स्टडी करनी है और उसका जो है समरी लिख के लानी है। सो उसकी समरी आप ढूंढने के लिए आप यहाँ पे एक बुक्स की समरी भी आपको मिल सकती है। सो गिव मी समरी ऑफ बुक 8 laws power, Robert Greene। So this is going to provide you with the summary of a book, 48 Laws of Power by Robert Greene. This is so fascinating, and I don't even have words for this excellent creation that's available for you। So आप इसको effectively use करके अपने बहुत से काम simple और आसान बना सकते हैं, और इसमें कोई भी rocket science नहीं है। आप सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दे के कुछ भी कर सकते हैं। अब इसने कहा था कि ये पोइम्स वगैरह भी लिख सकता है। अब अ, इससे पोइम लिखवा के अ, देखने की कोशिश करते हैं। सो इसी से मैं कोई भी रैंडम उठा रहा हूँ वर्ड, कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स, राइट ए
poem on, or you can see the, this tool is writing poem. Again, I'm not saying this is perfect or this is anything. Just to give you idea that how ChatGPTs work, I'm just throwing out some use cases जिसके जिसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके. एंड अब एक फिक्शनल स्टोरी अगर आपने लिखनी है तो राइट ए फिक्शनल स्टोरी ऑन ए कैरेक्टर. यहीं से रैंडम वर्ड्स उठा के उस एआई सिस्टम्स. ये पूरी फिक्शनल स्टोरी आपको एआई सिस्टम्स के ऊपर लिख के दे देगा. It's taking the time because since it's fiction, so maybe it's thinking or something like that. There was a powerful and intelligent AI system named Systematic. Systematic. Systemix. My bad. तो ये पूरी इस तरह आपको fictional story भी लिख सक के दे सकता है. So you have the idea that how much powerful tool this is. Or imagine if you can combine this ChatGPT with the Canva for post designing. You can use this ChatGPT for solving your Excel problems. You can use this ChatGPT for programming. Now one another thing that just came into my mind, उसके ऊपर भी जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये प्रोग्रामिंग में हम नॉर्मली क्या करते थे, स्टैक ओवरफ्लो यूज कर सकते थे. करते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या एरर या निकालने के लिए या डिबगिंग वगैरह के लिए, या कोई भी पीस ऑफ कोड हमें चाहिए होता था तो उसको यूज करने के लिए. तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू कोडिंग का कंटेंट भी यहाँ से मिल सकता है. सो इस रिस्पॉन्स को मैं स्टॉप करता हूँ और मैं करता हूँ राइट कोड फॉर क्रिएटिंग ए चैट बॉट इन पाइथन. अब पाइथन में अगर लेट्स से आपने चैट बॉट क्रिएट करना है तो उसके लिए कोड क्या होगा. अब नो आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको पूरा बिल्कुल रेडी करके एक चैटबॉट दे देगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू, अगर आप पाइथन के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें ट्विकिंग वगैरह खुद करनी होगी. अगर पाइथन प्रोग्रामर है तो आपको इसमें चीज़ें खुद से एडजस्ट करनी होंगी. लेकिन ये आपको बेस प्रोवाइड कर देगा उस कोड की, जिसकी मदद से आप अपना एक चैटबॉट बहुत आसानी से बना लेते हो. इट्स गोना सेव यू plenty of time. इज सिंपल कोड फॉर क्रिएटिंग अ चैटबॉट. ये आपको लाइब्रेरीज भी बता रहा है जो भी आपने यूज़ करनी है, और उसमें फिर जो जो बेसिक चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा. और द बेस्ट थिंग इज यू कैन कॉपी दिस कोड एज वेल. नाउ आई जस्ट क्लिक, आई हैव क्लिक दिस एंड द कोड हैज बीन कॉपीड. नाउ you can paste that code anywhere. So just to paste it here, you can see it has copied and pasted the whole code in here as well. So that's pretty much it. And just say goodbye. Let's say goodbye. Goodbye. It was a nice chatting with you. If you have any more questions or need any help, feel free to ask. Okay, so this was pretty much about ChatGPT. इसको आपको मैंने in a nutshell बता दिया ChatGPT होता क्या, और इसमें से डिफरेंट किस्म के यूज केसेस आपको बता दिए जो कि एक बिगिनर लेवल का बंदा ChatGPT को यूज करके अपने डे टू डे जो भी टास्क है, चाहे किसी भी फील्ड से है, वो अपने टास्क को मज़ीद आसान बना सकता है और अपनी लाइफ को या अपनी जो डेली डे टू डे वर्क एक्टिविटीज़ हैं या लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको इफेक्टिव बना सकता है, उसको स्पीड अप कर सकता है. सो दिस इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. और अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी के डिफरेंट यूज़ के सिनेरियोज़ के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो डू मेंशन दैट इन कमेंट. I'll try to make a separate video on each of the use case that you want to discuss. Take care, Allah Hafiz.